टेक्नोलॉजी। कॉमन कंप्यूट का मतलब है एक ऐसा कॉमन कंप्यूटिंग फैसिलिटी क्रिएट करना जिससे कि देश में एक बहुत बड़े सेक्शन को वो फैसिलिटी यूज करने का मौका मिले। कोई लिमिटेड 2-4 कंपनीज के पास वो सारी कैपेबिलिटी कॉन्सेंट्रेट ना हो जाए, इसीलिए ये कॉमन कंप्यूट का स्ट्रक्चर बनाया था। और जब एआई मिशन की स्थापना की थी तब 10,000 जीपीयू का टारगेट लेके चले थे। तब लगता था 10,000 बहुत बड़ा है, लेकिन जिस तरह का रिस्पॉन्स आया है और जिस ट्रांसपेरेंसी के साथ काम हुआ है, जिस एंथुजियाज्म के साथ, जिस ट्रांसपेरेंसी के साथ काम हुआ है, पहले राउंड में करीब 18,000 प्लस ऑलमोस्ट 19,000 जीपीयूज आए, ऑलरेडी डिप्लॉयड है, काम में ले रहे हैं। यूटिलाइजेशन कैसा है उसका? Sir, we have got a larger demand. Now we are pushing. Sarvango we are providing 4,000 GPUs. Another startups will ask for we are providing. सर्विस लेवल्स अच्छे हैं। Yes, sir. और सेकेंड राउंड ऑफ एम्पैनलमेंट में करीब करीब 16,000 जीपीयूज का आज यहाँ पर एम्पैनलमेंट डिक्लेयर हुआ है। बहुत अच्छी बात है। मिला के 34,000 जीपीयूज 34,000 जीपीयूज अपने आप में इट्स अ वेरी बिग लार्ज सिग्निफिकेंटली लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूट। आपने देखा सेमीकंडक्टर में भी फोकस था इकोसिस्टम को डेवलप करना, 5G टेलीकॉम में भी फोकस था कंप्लीट इकोसिस्टम डेवलप हो। एक तो था कि एक अप्रोच होती कि केवल 5G डिप्लॉय करते जाओ, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो हमको टारगेट दिया था वो टारगेट था कंप्लीट इकोसिस्टम डेवलप करो। इसीलिए 5G का डिप्लॉयमेंट भी हुआ, मैन्युफैक्चरिंग भी चालू हुई और 100 यूनिवर्सिटीज में 5G लैब्स का भी काम चालू हुआ, जिससे कि कंप्लीट इकोसिस्टम बने, टैलेंट भी बने, प्रोडक्ट्स भी बने और सर्विसेज भी रोल आउट हो। वैसा ही सेमीकंडक्टर मिशन में फैब, ओसैट, डिजाइन के लिए मटेरियल्स, जो इक्विपमेंट यूज होते हैं उनको इसमें लाना, प्लस टैलेंट के लिए 240 यूनिवर्सिटीज। कंप्लीट इकोसिस्टम नीड्स टू बी क्रिएटेड। वैसा की वैसा अप्रोच एआई मिशन में भी है। कंप्लीट इकोसिस्टम डेवलप हो, कंप्यूट फैसिलिटी मिले, फाउंडेशनल मॉडल्स बने, डेटा सेट्स रिलीज हो। पिछले 1.5-2 महीने पहले जब हम सब मिले थे तब एआई कोश लॉन्च हुआ था। आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर विद यू, already we have 367 data sets loaded on AI Kosh in such a short time frame. The approach is very clear, transparent, focused, and moving forward every day. So the app ecosystem is also now developing. We have many more challenges which are already in progress, and in the coming days we'll be announcing the winners of those challenges. So foundational models, compute capacity, safety, tools or technologies, I would say, data sets. In a sense, the entire ecosystem is now getting built. We are working on another program for a PhD program so that the foundational research, the basic research in AI can also be funded out of AI mission. And a large, running in millions, a large talent development program starting from the very basic to a really advanced level. तो ये कंप्लीट इकोसिस्टम एआई के एआई मिशन के तहत किया जा रहा है। सो these changes will really bring new opportunities for us and for the IT industry, which will go through a major transition period. We should be able to capture this transition as an opportunity rather than getting disrupted by it. Because whenever such a large technological change happens, it's very important that the industry and the government and the talent development ecosystem, they should all work together to make sure that we get prepared for the changing times. I wish you all the very best and would like to make some mentions about the 3 model
models which are selected today, or rather the 3 teams which are selected today, like Sarvam, these 3 teams also have a very big target in front of them. Whichever sector they focus on, they must become among the top 5 in the world. That's a clear target. That is something which is achievable also, because today foundational models are becoming, in a sense, one large base, but simultaneously many sector focused models. So I was asking the teams which got selected. One of the teams actually said that they would like to be either 1 or 2 within their selected focus area. So that's the spirit with which teams are working. I'm glad, and the pathway to that position is also visible, because whatever has been done so far is the criteria for taking them to the next level through this AI mission. This is also creating another opportunity for bringing the talent back to India. I hope some of the smart young engineers working on these teams would like to relocate back to India. Um, that would again be a great achievement for our country as a whole. What we used to think brain drain should now become a reverse brain drain. So I wish you all very good luck and wish you great success. Thank you.